आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? सर मुझे तो आपका ख्याल में ये पिक्चर क्या थी है? पहले तो मैं कश्मीर क्या मतलब? पहले तो मैं जैसे अंदर आया सभी मीडिया के दोस्त चिल्लाए बैड मैन बैड मैन। आज सर आज मौका बहुत बढ़िया है, जिन्होंने मुझे फिल्मों में बैडमैन बनाया, ये पॉपुलैरिटी दी, वो यहाँ खड़े हैं सुभाष जी, जिनकी वजह से मैं फिल्मों में विलन बना, बैटमैन बना, इतनी पॉपुलैरिटी शोहरत हासिल की। Very excited about this movie because we've been waiting for this release for a very long time. So this has been a much awaited film which we've all been looking forward to, and now it's been dubbed in Hindi, so it's for everyone to see. It's been 2 years actually since we've shot this film, and it's like very much a home production because my sister's in it. My favorite producer, Mr. Subhash Ghai, is in it. Rituparna Ghosh, who's been a family friend for a very long time, he's directed the film. So we're really anticipating the reviews from all of you and hoping for the best. Well, it's a real great combination of having Rabindranath Tagore's novel and Rituparna Ghosh's direction and Subhash Ghai producing it, and I'm really looking forward to this film. कश्मीर बनाने का जो मेरा मतलब था कि जब मैंने ऋतुपर्णा घोष की फिल्म, बंगाली फिल्म नौका डूबी देखी, तो मुझे ये फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने ऋतुपर्णा घोष को कहा यार इतनी अच्छी फिल्म है, ये फिल्म क्यों ना हम हिंदी ऑडियंस को भी दिखाएं। तो वो कहने लगे कैसे? मैं बोला अगर हम इसको डब भी करके दिखाएंगे और उसका म्यूज़िक जो है हिंदी में अगर लगाएंगे तो ये एक इतनी खूबसूरत फिल्म तुमने बनाई है। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है ये हिंदी ऑडियंस को डिप्राइव नहीं करना चाहिए। Very excited. I think this trend of actually regional films being seen by all Indian audiences is a wonderful trend, and like always Subhash ji has been a trendsetter and he has done it again. This is the first time I'm going to see the Hindi version, so I don't know, but yes, Gulzar Saab has done the lyrics and I'm really looking forward to that because he's a genius, and it's been like it's a surprise that he's actually done this. It's been like it's a gift that he's actually done this film with us. ये देखिए, मैं इस पिक्चर से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेल सॉन्ग है वो मुझसे गवाया सुभाष जी ने, और ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस, और मेरे ख्याल से इतना मेलोडियस म्यूज़िक बहुत टाइम के बाद हम सुन रहे हैं। एंड इट्स नॉवेल तो बहुत ही इंट्रिकेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी लाइन, तो एक्सपेक्टेशन तो हाई है। Nowka Doobi is inspired from Rabindranath Tagore's short story, but it's not a complete. It's not the complete actual version. It's the characterization is a bit different from the film, from the book, and I think it's commendable that till today, in our age, in our generation and era, we can have a film adapted to the mentality of someone in his generation. It just shows how futuristic he was, and. If you see the subject of a film, it's actually a very sensitive subject that we are hitting, and I think it's for all generations, all age groups, and it's commendable. Like I said, very future. जो लोग ये कहते हैं कि आजकल फिल्में अच्छी नहीं बनती हैं, जो लोग कहते हैं कि वो सिनेमा क्लासिक नहीं है, वो वाली बात नहीं है, साबी भी गुलाम की बात नहीं है, साहब वो परिणीता की बात नहीं है, तो वो फिल्म उन लोगों के लिए फिल्म का जवाब है। जाकर देखें और हमें बताएं, अच्छा सिनेमा आज भी जिंदा है, क्लासिक फिल्में आज भी बनती हैं। अगर आप कश्मकश देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आई एम नॉट सेलिंग इट, आई एम सेइंग इट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जैसे सुभाष जी ने अभी कहा कि अगर एक अच्छी फिल्म है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी पर आधारित फिल्म है,
तो अगर मुझे बंगाली नहीं आती तो मुझे क्यों डिप्राइव किया जाए इस बात से कि मैं उस खूबसूरत कहानी को, उस खूबसूरत फिल्म को ना देख सकूं। अंग्रेज़ी फिल्में जो हिंदी में डब हो रही हैं, स्पेनिश फिल्में इंग्लिश में डब हो रही हैं, हमारी हिंदी फिल्में अभी हमारी फिल्म आई एम कलाम हमने लॉस एंजलिस में दिखाई, वहाँ पर वो सब टाइटल में थी। तो अच्छी फिल्म तो सभी तरह से सराही जा सकती है। वेल, जो लोग बहुत ओरिजिनल में जाते हैं उनको डेफिनेटली लगेगा कि बांग्ला देखनी चाहिए, लेकिन जो सिर्फ हिंदी ऐसा देखने जाएंगे, आई डोंट थिंक दिल मेक अ डिफरेंस। It's a visual treat. Seems like a very detailed kind of a period creation, and seems like wonderful performances. It's a very typical Bengali village look. आप लोग के लिए शायद अलग होगा, लेकिन इन कैलकाटा और बंगाल में विलेजेस में everyone dresses like that. It's very typical, very simple, normal cotton sari, normal cotton blouse, no makeup look, बहुत ही de-glamorous look. और I had to put on a lot of weight for the film. I put on 5-6 kgs for the film. And I had oil in my hair right through, I had oil in my face right through. I didn't have to look good at all. But it was good. I just have to say a good film is a good film. Be it be small, be it be big. You just need to have it presented well to the audience and just make a good subject with lots of heart, and it works. See, definitely it's a different culture, and language barrier से कभी आप इमोशन समझ नहीं सकते हैं, बट अगर आप वो लैंग्वेज को समझते हैं, अपने लैंग्वेज में है, so you can relate to it better. Honestly, I didn't think it was going to be such a huge premiere. I thought it was just going to be like a screening with a few guests. And I just walked in because I'm late because I just had a shoot. So I didn't realize that, I had to be here on time and it's a proper premiere. But to my surprise, it is a proper premiere. There's proper media and everyone. I just thought it's a small screening that we're going to have today. So I'm still... I haven't even had 1 minute to digest the fact that we are having a premiere, but I'm very excited. Like I said, we've been waiting for this film for 2 years. And we have a premiere tomorrow in Calcutta. I'm trying to attend that. We have a premiere on the 22nd in Delhi, which I will be attending with my sister as well. But my sister's not being able to come here today, but she will substitute and she will be there tomorrow. So we both are trying to make it happen and be there for our movie premieres, because this is a film which is very close to my sister and to me, to my family, to my producer, to my director. And for the first time we are coming together, and whether the film works or not, for both of us, it's going to be something which is going to be taken back to our history, to our profiles, to our kids, and it's going to remain with us for a very long time.